So now we'll be starting with a new topic, why do we fall ill? हम बीमारी क्यों पड़ते हैं? हमारी बॉडी में डिफरेंट सेल्स टिश्यूज़ हैं जो डिफरेंट फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी करते हैं. हर टिश्यू का अपना अलग काम है कि अब उनका किडनी अब एक्सक्रीस्ट्रा के लिए यूज़ होता है, लंग्स ब्रीदिंग के लिए यूज़ होता है, हार्ट बीटिंग के लिए फॉर पंपिंग ब्लड टू ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. डिफरेंट एक्टिविटीज़ डिफरेंट टिश्यूज़ की होती है, तो सब इंटरकनेक्टेड है. अगर एक हमारा ऑर्गन खराब हुआ तो दैट विल हिंडर द परफॉर्मेंस ऑफ द अदर ऑर्गन एज वेल. सो अगर प्रॉपर फंक्शनिंग और चाहिए तो प्रॉपर हमारे टिश्यूज़ ऑर्गेनाइज होने चाहिए एंड कोई भी प्रॉब्लम ना हो, तो हमारी वेलबींग होनी चाहिए फिजिकली, मेंटली एंड सोशली, तभी हमारा बॉडी प्रॉपर वर्क करेगा. Cells are the basic unit of organisms. Cells are made of variety of chemical substances like proteins, carbohydrates, fats or lipids. Lipids are the other name of fats and so on. Cell is a dynamic place. Something or the other is always happening inside them. Complex reactions and repair goes on inside the cells. हमारी बॉडी में कंटिन्यूस प्रोसेसेस रहेंगे, रिएक्शंस रहेंगे. कोई हमें चोट लग गई तो उसका रिपेयर भी कंटिन्यूस रहेगा. So new cells are being made. In our organs and tissues, there are various specialized activities going on. Heart is beating, lungs are breathing, kidneys filtering urine, the brain is thinking. All these activities are interconnected. See, for example, if kidneys are not filtering urine, so the accumulation of poisonous substances will take place inside the body, and due to the accumulation, the brain will stop thinking properly. So for all these interconnected activities, energy and raw material are needed. So what is raw material? The raw material is the food that we eat. The food is a balanced diet that we are having, and balanced diet is having all the essential nutrients, proteins, vitamins, minerals, carbohydrates, fats as well. So anything that prevents proper functioning of cells and tissues will lead to a lack of proper activity of the body. अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो गई तो दैट विल ऑल्सो हिंडर द एक्टिविटीज़ ऑफ आवर बॉडी. कुछ भी कम हो गया, प्रोटीन्स या विटामिन्स, तो हमारी बॉडी कम्प्लीटली इफेक्ट हो जाएगी उससे. सो हेल्थ एंड इज फेलियर. हेल्थ इज़ द आइडिया ऑफ बीइंग वेल. अब अगर हमारी बॉडी वेल है तो ही हमारी हेल्थ होगी, इफेक्टिव फंक्शनिंग. So what do you mean by health? It is the state of being well enough to function well physically, mentally and socially. So health की examples कैसे कह सकते हैं हम कि अगर we have heard various times that we should live in a healthy environment, you should talk in a healthy way, your way of talking is healthy. So healthy means state of well-being, कि तुम कैसे काम कर रहे हो, सोसाइटी में कैसे रह रहे हो, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली. पर्सनल एंड कम्युनिटी इश्यूज बोथ मैटर फॉर हेल्थ. इफ हेल्थ मीन्स अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, इट कैन नॉट बी समथिंग दैट ईच ऑफ अस कैन अचीव एंटायरली ऑन आवर ओन. अब अगर ये है कि हेल्थ विल डिपेंड ऑन द सराउंडिंग्स, ऑन द एनवायरमेंट, हेल्थ इज एट रिस्क इन अ साइक्लोन इन मैनी वेज. सी, अगर एक साइक्लोन आ जाता है, साइक्लोन मीन्स हाई टाइड विंड्स आ जाती है, तो विंड्स के साथ हमारा वाटर एक्यूमुलेट हो जाएगा. कहीं बारिश हो गई तो वाटर एक्यूमुलेशन हो गया, हमारा होम जो फिजिकल एनवायरनमेंट है वो ख़राब हो गया, तो उससे वी कैन फेस अ लार्ज नंबर ऑफ डिजीजेस. सो ह्यूमन बींग्स लिव इन सोसाइटी. आर सोशल एनवायरनमेंट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन आर इंडिविजुअल हेल्थ. अगर हम डर्टी एनवायरनमेंट में रहेंगे कि हम सारा हमारे यहाँ पे मस्कीटोज ब्रीड कर गए, पानी एक्यूमुलेट है, हमारा अपना डर्टी फूड यूज़ कर रहे हैं, कोई 3-4 दिन से स्टेल फूड है वही हम खा रहे हैं, तो दैट विल इफेक्ट आवर हेल्थ. सो सोशल एनवायरनमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट. We live in villages, towns or cities. In such places, even our physical environment is decided by our social environment. अब अगर we can consider an example that no agency collects and disposes the garbage. So what will happen? Garbage will keep on collecting, and then the flies, mosquitoes will breed on them, thus affecting the environment and will breed number of diseases. No one cleans the drains. The drain will clog and the water will start flowing on the roads and the houses, so that will also affect our health.
No one ensures that water does not collect in the streets or open spaces. So अगर वाटर कलेक्ट हो गया, वही सेम मस्किटोज फ्लाइज उन पे ब्रीड करेंगे एंड फिर अगर वो हमारे खाने पे बैठते हैं या हमको स्टिंग कर लेते हैं तो हमको वेरियस नंबर ऑफ डिजीजेस हो सकती हैं. क्लेanलीनेस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर इंडिविजुअल हेल्थ. तो पब्लिक हमारा जो एनवायरनमेंट है उसमें हम क्लीन रखें सराउंडिंग्स, तभी हमारी इंडिविजुअल हेल्थ मेंटेन हो सकती है. We need food to be healthy and this food will have to be earned by doing work. अगर हम पुअर हैं, हमारे पास मनी की शॉर्टेज है, तो we cannot buy proper balanced food and balanced food नहीं होगा तो हम हेल्दी नहीं रहेंगे. So for this opportunity to do work has to be available. अगर हमारे पास काम ही नहीं होगा तो how will we earn the money? So we need to be happy to be truly healthy. Do not mistreat or to be afraid of each other. And social equality and harmony should be maintained in order to live healthy. So various factors are important for healthy living. So prevention and transmission of diseases by maintaining sanitation and hygiene. So fecal matter, it should be prevented by fluids, fingers, flies, fields and floods. Fluids protect the water source, maintain the purity of the water and treat and store water safely, तभी we can be healthy. Fingers, wash hands before preparing and taking food. Wash hands after defecation, that is sanitation. Flies cover the food. अगर हमारा food covered रहेगा तो flies will not sit on them and thus will not hamper the purity of the food. And control flies is sanitation. How can we control flies? We can control flies by avoiding the accumulation of the water, by covering our food. Do not let the foods be kept in the open. Fields, clean fruits and vegetables before use and avoid open defecation. तभी we can be a healthy person. Floods, proper drainage system होगा तभी we can be healthy, and if we treat water properly then it will help us to keep our environment healthy. So distinction between healthy and disease free. See, दो different terms है तो दो different अलग meaning होगा. We can be disease free but we are not healthy. ऐसे कैसे example हो सकता है कि हमें कोई भी बीमारी नहीं है but we are in depression, we keep thinking and we feel sad, तो we are not healthy. तो बट हमें कोई डिजीज़ नहीं है, वी आर डिजीज़ फ्री. हमें टाइफाइड, कॉलरा, कोल्ड, कॉमन कोल्ड को ऐसी कोई डिजीज़ नहीं है बट वी आर नॉट हेल्दी बिकॉज वी कीप ऑन थिंकिंग, वी आर सैड एंड वी आर नॉट कंफर्टेबल सिटिंग इन द एनवायरनमेंट. सो डिजीज़ मीन्स बीइंग अनकंफर्टेबल. डिजीज़ तो कोई बीमारी है बट हेल्दी इज सोशली, मेंटली एंड फिजिकली व्हाट इज हैपनिंग इन आवर बॉडी. Good health for a dancer can be if he or she is able to stretch his body into difficult but graceful positions. Good health for a musician can be enough breathing capacity in lungs to control the notes from fluid. तो good health उसकी वो है कि that he or she can do the work comfortably. We can be in poor health without there being a simple cause in the form of an identified diseases. डिजीज़ मीन्स इंडिविजुअल सफरर्स, कि डिजीज़ है तो हम कोई डिजीज़ है, हम कोई बीमारी से सफ़र कर रहे हैं बट हेल्थ इज़ डिफरेंट. सो वी हैव अ क्वेश्चन ऑन पेज 178. स्टेट 2 कंडीशंस एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ. In order to maintain a good health, we should keep our social environment clean and good economic condition and earnings. अगर हमारे पास earning नहीं होगी तो हमारे पास money नहीं होगा तो that means that we will not be able to buy food for our healthy living. Second question, state any 2 conditions essential for being free of disease. So in order to keep free of disease, we should live in a healthy and hygienic environment and get vaccination against infectious diseases properly. Third question, are the answers same or different? See, these answers are different because I told you a person can be free of disease but not be a good, healthy, mentally, socially and economically. Disease and health free are 2 different things. So disease and its causes. What does a disease look like? We have our tissues inside cells, tissues, organs, organ system. So tissues make up psychological systems or organs as its parts and it has particular function.
हर ऑर्गन का अलग फंक्शन है. डाइजेस्टिव सिस्टम अलग करता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम अलग करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम ब्रीदिंग के लिए काम आता है. So digestive system has stomach, intestine. It helps us to digest food taken in from the body. The musculovascular skeleton is made up of bones and muscles. So musculoskeletal system क्या करता है? That keeps the body parts together and helps the body move. So when there is a disease, either the functioning of one or more of the system will change for the worse. तो कोई भी डिजीज़ होती है तो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स इफेक्ट होते हैं, जिससे हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग को हैम्पर हो जाता है. These changes give rise to symptoms or sign of disease. So signs give a little more indication of the presence of a particular disease. तो फॉर एग्जाम्पल हमको हल्का सा हेडेक हुआ, कफ, कोल्ड, ये सब हमारे साइंस है कि या वी आर सफरिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर डिजीज. सो अगर हमको नॉर्मल हमारी बॉडी हल्का फुल्का है तो दैट मीन्स विल नॉट गो टू अ डॉक्टर. सो अगर बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है we will not refer a doctor, but that if last for a long period of time कि वो continuous रहेगा ही रहेगा तो that then we should prefer to refer a doctor. So there are two types of diseases, acute and chronic. Time period of every disease is different for every disease. तो अगर कोई तो डिजीज़ हमारा शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, शॉर्ट लाइफ स्पैन होगी, कोई डिजीज़ हमारी लार्ज टाइम के लिए होंगी और एज मच एज अ लाइफ टाइम एज वेल. सो the disease that last only for very short period of time are known as acute diseases, like common cold. Common cold हमारा 4 to 5 days में क्योर हो जाता है. But some ailments last for a long time, even as much as a lifetime, and are called chronic diseases. Example, elephantiasis. So chronic diseases and poor health. Acute and chronic diseases have different effects on our health. अब अगर हमारा शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए कोई डिजीज़ हुई तो दैट विल नॉट टेक, उसके पास इतना टाइम ही नहीं होगा कि हमारी बॉडी के सिस्टम को इफ़ेक्ट कर सके. बट अगर कोई लार्ज लॉन्ग टाइम के लिए हमें एलिमेंट हो गया तो उसके मेजर इफ़ेक्ट्स हो सकता है हमारी बॉडी में, क्योंकि उसके पास लॉन्गर टाइम है हमारी बॉडी में प्रिवेल करने का, एंड दैट विल हैव अ ड्रास्टिक लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑन आवर हेल्थ. सो any disease that causes poor functioning of some part of the body will affect our health, but an acute disease will not have time to cause major effects on general health, while a chronic disease will do. जैसे cough and cold है, that will no lasting effects, but tuberculosis of lungs that will affect our bodies. It will reduce the weight and we'll feel tired continuously. So chronic diseases prolonged general poor health, drastic long-term effect on people's health. So acute diseases will not affect the body, but chronic diseases will hamper the health, good health, and it will have a long-term effect on our body. So what are the causes of diseases? Causes of diseases क्या हो सकते हैं? We are not eating our food healthy. We are drinking unclean water. Our surroundings are not clean. We are not having well-nourished food. Some genetic problem is there inside our body, or so why do we having unclean drinking water, or we are not having enough food? So poverty, we are poor, we cannot afford such type of food. So poverty is the main cause of causing diseases. If a baby is suffering from loose motions, that means if he or she got affected from an infection. But where did that infection come from? From unclean drinking water, not healthy food, not enough food, not well nourished, or some genetic disease. So public services are poor. Poverty or lack of public services become cause of the disease. So what are infectious and non-infectious causes? Diseases where microbes are the immediate causes are called infectious diseases. जो microbes spread in the community and spread diseases. So that means they are infectious diseases. But diseases that are not caused by infectious agents, their causes vary. Internal causes are called non-infectious diseases. That are internally, and infectious diseases are externally. For example, cancer, high blood pressure, they are internally inside our body system. So these are non-infectious diseases. Questions on page 180.
List any 3 reasons why you would think that you are sick and ought to see a doctor. If only one of these symptoms were present, would you still go to the doctor? Answer: headache, fever, muscle pain, dysentery. अगर हमको हल्का सा headache है, then we'll not go to a doctor. But if this symptoms prevail for a long time, then we should consult a doctor for proper treatment. Question number 2. In which case long-term effects on your health are most unpleasant? Jaundice, if you get lice, if you get acne. So lice means अगर हमारे सर में जुए हो गई. So jaundice में we have a prolonged effect because this chronic disease lasts for a long period of time. It develops inside our body and does not spread rapidly. So it will have a prolonged effect in our body. Thank you.